guys. Today we have with us Chancellor of the St. Martinus University, Dr. Murli Ginjupalli. We have CEO of St. Martinus University, Dr. Mr. Sajja, and we have Admission Director of St. Martinus University, Mr. Akhilesh. So we are here to just fulfill the dream of the aspirants, those are willing to become doctor. And just recently student wrote the NEET examination, and we cannot accommodate in India all the aspirants. That's the reason there are several students, those are willing to find the opportunities to go abroad for higher education. And this is one of the best school we come up with. And the best thing in this school is students are getting opportunity to become doctor in United States of America in affordable cost. So now we do have Murali Ginjupalli. I request him, Dr. Murali Ginjupalli, to tell about the university, and further reporters will ask the question, and the session will start. Thank you very much. Thank you, Mr. Dahat. Ladies and gentlemen, my name is Dr. Ginjupalli. I'm a Chancellor of St. Martinus University. I have our CEO, Mr. Sajja here, and also Director of Admissions, Akhilesh Agarwal. And Dahatji represents the InterAdvise consultancy international students to send to international students to the Curacao. We are located in Curacao. It's a Netherlands Antilles island. SMU started in 2000 year, and we've been graduating students ever since then. We have a very good success rate of getting into residency programs, and in US, our students have also practicing in India after they finish their course and they clear the FMG exam, and they practice in India also. So basically our university and InterAdvise has been traveling together for last 10 years, and we had a very good trust in them to be our partner in India to enroll students to our university. Mr. Dahat and his team has done an excellent job for years now, and sending students with trust with the families, and they trust Mr. Dahat, and Mr. Dahat trusts us. He was in the campus multiple times in the past years, and he knows how the university runs there and how the education being delivered to the students. So we are here for this new 2024-2025 admissions. We will be answering questions if you guys have any, and we'll be available here for the rest of the day. And so, thank you very much. सर थैंक यू आपने इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एजुकेशन के लिए यूएस में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। मेरा सवाल ये है कि मल्टीपल इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो मेडिकल एजुकेशन देती हैं, तो सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी स्पेशल क्या है, इसमें क्या यूएसपी है आपकी कि इंडियन स्टूडेंट्स उसके तरफ ज़्यादा जा सकते? Exactly, very good question. I can answer in English if it is not a problem. Lot of universities from a lot of parts of the world, which we know mostly is East Europe countries, Central Asia countries, and East Asia countries that people go to study medicine. When they finish their medicine course, they have to come back to India and either write the FMG exam, or they have to study for the boards, USMLE and step 1, step 2, and then go to US. When you come to Curacao, our university, you're bypassing all those things and you're directly going into United States system to become a doctor. Right now there is a lot of need of physicians around the world, especially in America. You have the opportunity to go directly from here after your higher education. You can come to Curacao, complete your course in 2 years there, and then do the clinical rotations in the United States. So that's the best part, where you don't have to wait until finishing the course 6 years, 7 years, and then take the route to become a physician in the United States. Here, you're completing within the 4 years and 5 years of program, you're already
stepping into PG program, and then the affordness of the program is very less compared to any other places in the world. So it's a best opportunity for students who want to become physicians in US. So they can come directly to us, and we help them to become a physician in the United States. Good morning, sir. I think the biggest concern there is for students is the financial aspect of it. So, is there any financial aid or scholarships available that your university makes available? Yes, we do have a scholarship available. Our regular fees is being subsidized for Indian students already, like almost 40% of the annual fees is being given as a subsidy to Indian students especially. And apart from that, they also have scholarships when they show excellency in their classes. And apart from that, after they finish their 5 years of bachelor's in medicine, which is MD, Doctor of Medicine, they can get their PG, which is costless. So they don't have to pay anything. When they join into the PG program in the United States, which is called residency program, they make money. So it's actually a free of cost entire program after they spend 5 years. जो एजुकेशन है और क्लिनिकल जो ट्रेनिंग है उसको कैसे किस पैरामीटर पे आप सुनिश्चित करते हैं कि बेटर एजुकेशन मिल सके स्टूडेंट्स को? So when it comes to clinical rotations or clinical aspects of medicine in India or other parts of the world, and especially compared to US, in US the program starts at the second year of the course. So 2 years of clinical rotations helps them to know more to treat a patient. So the system that they use was being practiced by these students already when they are in the school. So students from India going directly to US will have a difficulty in understanding the US system, but the students coming to Curacao, St. Martin's University, will be easy ride for them because they already know the way how the patients have been taken care in the United States system. So that's the best part, where they are exposed to the clinicals in an early stage. नमस्ते सर, ये हमारे MBBS कार्यक्रम को अन्यों से कैसे विभाजित किया जाता है? So there is no big difference in MBBS and MD when it comes to when you become a doctor after the completion of the course. But becoming a doctor, studying the both degrees, is the way how you see. MD US is 4 years, MBBS is 4.5 years in India. So in 4.5 years they do extra 1 year of the house surgency, where in US they do 2 years of study and then 2 years of clinical rotations. So there is a big difference in study wise, but the degree when it comes to practice, they are all the same. इसमें मैं कुछ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मुरली सर ने ऑलरेडी बताया है। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है, कुछ कंट्रीज़ में 5 साल का होता है, कुछ कंट्रीज़ में 4 साल का होता है। सो एज़ पर द करिकुलम ऑफ द कंट्री उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। अभी जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है, जैसे कि हम इंडिया लेते हैं, तो इंडिया में 4.5 साल का जो है वो स्टडी होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 5.5 साल में कोर्स हो जाता है। हमारे यहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं 5 साल का पूरा कोर्स होता है, ये यूएस सिस्टम के अनुसार होता है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अभी कुछ कंट्री है जिसमें 6 साल का प्रोग्राम है। तो 6 साल क्यों है? क्योंकि जो कंट्रीज़ है जैसे कि जिसका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारा कोर्स पूरा इंग्लिश में है, क्लिनिकल्स भी इंग्लिश में होते हैं क्योंकि यूएस में होते हैं। बाकी कंट्री में क्लिनिकल्स के लिए बच्चों को उसकी लोकल लैंग्वेज पढ़ना और आना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए 1 साल, करीब 1 साल बच्चे वो लैंग्वेज पढ़ने में उनका जाता है। इसके लिए वो प्रोग्राम का ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, वो 6 साल का होता है। हमारे यहाँ पे सब करिकुलम इंग्लिश में है और प्रैक्टिस भी इंग्लिश में है, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं। मेडिसिन पढ़ना इट्स नॉट ओनली स्टडी, जैसे कि आप गए नॉलेज ले लिया, इट इज़ नॉट इनफ। आपको 2 पार्ट है इसमें, वन इज़ द लर्निंग मेडिसिन एंड अदर वन इज़ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। When you practice the medicine, you need to communicate with the people. You need to communicate with the patient. All right? तो उसके लिए लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत होती है। That's the reason हमारा जो प्रोग्राम है 5 years का है, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं वो इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉलैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
यूके में भी काफ़ी सारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। क्या इसके लिए स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है यूनिवर्सिटी की ओर से? सर फिनेंशियल सपोर्ट है यूनिवर्सिटी का, हमने हमारे ब्रोशर में भी डाला है। जैसे कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं हर साल, जब भी हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके पहले हम एक स्कॉलरशिप का टेस्ट लेते हैं, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चों को अच्छे जो नंबर्स लाते हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप है। अबाउट $13,000 की हम स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद यूएसएमएलई का क्राइटेरिया है, यूएसएमएलई में अगर बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो उसमें भी बच्चों को 8,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कि एसजीए स्टूडेंट गवर्नर बॉडी जो है उसका अगर कोई मेंबर होता है और उसका जीपीए 3.5 आ जाता है तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो हर मोड पे जैसे जैसे बच्चा स्टूडेंट हमारा छात्र तरक्की करता है उसके अनुसार उसको फाइनेंशियल एड्स मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो पासिंग परसेंटेज क्या है आपके यूनिवर्सिटी का? 92% we have passed USMLE step 1 after the 92% after the 2 years of the medicine. So we have a very good pass rate when it compared to other parts of the world, other medical universities in the world. So our students strive to learn very good, and then they excel in the exams when they take the other board exams, kind of board exams we call them. Step 1 is a third party exam which is required to become a resident in US. So इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का देखा तो सिक्योरिटी और मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए, तो मार्टिनेस कैसे सपोर्ट करती है? So Martinez University is in Netherlands Antilles. It's a part of Netherlands Kingdom still, and they are very secure island. I mean, they have like 5-6 islands which they still have under their control, and all of them are like very secure. Then also weather-wise, it's a hurricane-free zone, which means like some of the Caribbean islands has problems with the Caribbean hurricanes, but not in the Curacao, which is very secure, and security wise it's very strong, I can say. We are very confident that students have no issues so far. या और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कैंपस में काउंसलर होते हैं। अगर बच्चा कोई होम सिकनेस फील करता है, क्योंकि ये बच्चे जो है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास आते हैं, तो अगर उनको कोई तकलीफ़ है, होम सिकनेस बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास काउंसलर हैं जो कि बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और 1-to-1 उनसे करके उनको फिर से बच्चों में मिंगल कराते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो सब कैंपस में मिक्स होते हैं। सेकेंडली हेल्थ केयर सिस्टम भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। उसके बाद जो सबसे महत्व रखता है जो कि फूड, तो हमारे यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है। बच्चे जब जाते हैं या हम भी अगर बाहर जाते हैं तो वी मिस इंडियन फूड, तो यहाँ पे खास करके मुरली सर ने यहाँ से इंडिया से ही शेफ मंगवाए हैं और हमारे बच्चों को 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंडियन फूड मिलता है। सो दैट वे वी टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी क्या इंटरनेशनल जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज की गई है क्या? Yes, all the medical schools in the world has to be listed in the World Directory of Medical Schools, and we are registered there. You can find it on the website. And also 2024, the governors which look after the international medical graduates in the United States, looking for medical students who are coming, has to come through a accreditation body. The university has to be accredited by some organizations which are recognized by the World Medical Federation for Education. So we are accredited as of December 2023, and we've been our students are accepted to United States because ours is a accredited school. So accreditation है हमारा, international standards maintain करता है. So we have everything that needed for a student to come out, whether he is coming to India to practice, study, and then whether he goes to UK to practice after the study, or US. So he is well taken care in that aspect. हमारे स्कूल का जो रिकॉग्निशन है, जैसे कि सर ने बोला है कि वर्ल्ड मेडिकल फेडरेशन फॉर एजुकेशन से जो बॉडी एक रजिस्टर है उनसे हमें एक्रेडिएशन चाहिए,
तो अभी कुरासाओ के लिए यहाँ पे 3 बॉडीज़ है जो कि स्कूल को एक्रेडिटेड कर सकती है। एक है ACCM, दूसरी है CAMHP और तीसरी बॉडी है AEPO। तो हमारा एक्रेडिटेशन AEPO के साथ है और AEPO का रिकग्निशन 2032 तक वैलिड है। तो हमारा पूरा कोर्स जो है वो रिकग्नाइज है एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। जो यूएस से पहली है, ये एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन कराते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो पास करने में या सक्सेस पाने? So our curriculum is designed in a way that from the first year itself we will prepare them to take the exit exams. What we call them exit exams, like step 1, step 2, or IMG, FMG exam in India. So those exams we prepare the students when we are teaching them in the classes too. So they are already ready for those competitive exams when they come out of the class. So that way they are prepared. So instead of letting them prepare at the end of the course, we start them from the beginning of the course. मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई विशेष परीक्षा, विशेष प्रवेश परीक्षा या कोई या कोई विशेष प्रवेश परीक्षा या भाषा आवश्यकता है उसका? दरअसल ऐड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन कि क्या इस आपके इसके लिए MBBS एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है या कोई लैंग्वेज की कोई बैरियर्स है क्या, कि पर्टिकुलर सी लैंग्वेज में आपको जानकारी होना चाहिए क्या, कोई इस तरह का पैरामीटर्स है? We have a entrance exam just to know the knowledge of your student and why they wanted to become a doctor. At every admission, we has the student to go through the exam, and if they pass and everything, they get the admission. And they also have a personal interview with the professors at the university. And once they pass the the personal interview with the professors, they'll decide whether the student get the admission or not. Other than that, there is no additional requirements. If they pass the intermediate higher secondary school, then they have the science marks above 50, and we don't NEET is preferred, but it is not required. So if that is answer for your question, yes. And there is no barrier in the language also. No barrier in the language. English. English is the medium only. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो कि कुरासाओ कैंपस में है 3 साल, वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। और जो US में है वहाँ पे तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में बच्चे जाते क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं 2 साल, तो ये सारा इंग्लिश में है। इवन उनके जो एग्ज़िट टेस्ट है, जैसे कि NBME है, USMLE है, ये सारे इंग्लिश में ही होते हैं। तो नो एनी अदर लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी बात ये है कि जैसे कि सर ने बताया है कि कोई आपके लिए एंट्रेंस है क्या? यस, हमारे पास इंटरव्यू होता है बच्चों का, जब बच्चा फुलफ़िल करता है एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया NMC का जो एंट्री क्राइटेरिया है वही हमारा एंट्री क्राइटेरिया है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन का एंट्री क्राइटेरिया है वही हमारा भी एंट्री क्राइटेरिया है। जब बच्चा फुलफ़िल करता है तो वी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड वन ऑफ आवर फैकल्टी दे कंडक्ट इंटरव्यू। सो बच्चे का इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद जब हमें पता चलता है फैकल्टीज़ को कि यस स्टूडेंट इज़ कीन टू बिकम अ डॉक्टर एंड ही कैन बिकम अ डॉक्टर, उसके बाद उसका एडमिशन तय किया जाता है। जैसे कि हम पहले आपको बता दें कि अगर आप 5-6 साल पहले की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी कोई नीट की एग्ज़ाम नहीं होती थी। तभी 12th के स्टैंडर्ड के मार्क्स के ऊपर ही एडमिशन होता था, क्योंकि बाद में इतने एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं, 25 लाख एप्लीकेशन आ रहे हैं, 1 लाख हमारे पास जगह है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमने कुछ नए एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए, नीट वगैरह, ठीक है। तो ये बात अभी कुरासाओ में नहीं है। तो जो 12 का मार्क्स है बच्चों का, वही एक क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। आपने बहुत So once a student gets in and into the university, what support services do you provide in terms of accommodation and the process of them getting into the university? So once they get the admission, the consultants explain them how the university will be there and then the accommodations. At the university, once the person reaches to the island, we have a service to pick up from the airport, and then once you get into the dorms, we have 3 times meals, which is we made to make sure that student is fed properly in time
and so they don't waste the time on preparing all these things. And we also have a laundry service to help the students to keep them tidy and nice. So we make the student just to focus on education because it's a very young age, they're coming to the university and they need that additional support. Just माँ का जो होता है घर में, how she takes care, we provide that to the student so he or she can focus on studying, and that is done in a every student manner. It's not like it's only available for certain students who pay it. It's already incorporated into the fee structure, so students who admitted here will get those services automatically. You know what, we have student body to support the newcomers and everything, in addition to the counselors. इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई यूएस में करना चाहते हैं, Right. बहुत सारे लोगों का सपना है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस चैलेंज को कैसे आप कम कर रहे हैं, कैसे दूर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यूएस में आपके पार्टनर्स यूनिवर्सिटी से जुड़कर मेडिकल की पढ़ाई कर सकें? Right, very good question. Out of all the opportunities that people who wants to go to United States, Caribbean route, St. Martin's is the best route because in here you are coming directly to the island, studying the same program that is offered in US, and you're finishing in a record time because you know if a student who wants to become a doctor in US, they need to do the undergrad first, which means degree pass करना है पहले उसको. Then they can go to the MD degree. यहाँ पे you are already after the high school, you are coming into medicine program already. So you are saving time versus going to study directly in US. Inter pass होने के बाद degree करना है वहाँ पे, and then you get to competitive exam and then get the admission in medical school. Whereas you are here in the Caribbean, our university, you are bypassing that 4 extra years and you are also completing the course in time. Whereas Indian people who study medicine here, after 5.5 years, they have to spend extra 6 months to finish their clinical rotations in US and extra year to study for the steps. So all these things will cut down if you come to St. Martin's because you are saving your time and you're becoming a doctor quicker than anybody else. And there's a huge difference between the price as well. Yeah. If you go directly to the US and try to do it, it takes about 8 years, $500,000. Whereas you take SMU route, it's roughly about 150. Right. And 5.5 years. And then after that you make it back. Yeah. So which is like zero cost. Yeah. So if you are a good student, smart student, and how to know manage your time and everything, SMU is the best to come in. सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो फीस का है और टाइम का है. वहाँ पे 8 साल लग जाते हैं आपका एमडी का पढ़ाई पूरा होने के लिए, हमारे यहाँ पे 5 साल में होता है. दूसरा जो प्राइस सर ने बताया है, हमारा $62,050 का फ़ीस है, इंडियन स्टूडेंट के लिए सब्सिडाइज फ़ीस है, तो ये करीबन 52 लाख 52 लाख रुपीस हो जाता है इंडियन करेंसी में. और जो बच्चे यूएस में जाते हैं उनको तो पहले 4 साल पढ़ना है, $25,000 भी हम पकड़ते हैं तो 100,000 पहले 4 साल में चले जाते हैं और देन 50,000 अगर पकड़ते तो 200,000. So $300,000 it cost about 2.5 crores or more than that. तो 2.5 crores और यहाँ पे है 52 lakhs. So there is a huge difference. And the success rate of passing of the USMLE of our student is very high. And we are providing clinical rotation under one roof, so they don't need to go from one place to other place. एक ही जगह पे सारे रोटेशन मिलता है तो उनका टाइम भी बच जाता है. एंड दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी आई वांट टू टेल यू एंड आई एम प्राउड टू टेल यू कि सेंट मार्टिनस एक ही यूनिवर्सिटी है क्रासाओ में कि जिनका हॉस्पिटल जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है और हॉस्पिटल भी है मिशिगन में, जहाँ पे बच्चे 2 साल का अपना क्लिनिकल्स पूरा करते हैं और सारे रोटेशन उनको एक ही जगह पे मिशिगन में मिल जाते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस. इंडियन स्टूडेंट के लिए कुछ पार्शियलिटी होता है सर, जैसे लाइक ब्लैक एंड वाइट? No, there is no anything difference between the students and from any part of the world. When they come to SMU, they are treated as the one because they are all in a doctor community. So we teach them to become a part of a team member because if they are going to practice in India or US, they have to be a part of it because आजकल डॉक्टर
टीम के साथ काम करता है. He has a respiratory therapist, he has nurses, he has physiotherapists. Everybody in the part of the healthcare system is a team member, and doctor has to lead them. So we train them to become leaders. So whether he come from India, whether he come from UK or Africa or any part of the world, when they come to SMU, they all become doctors. They don't become independent of the countries. So our motto is to treat them all the same, and there is no differentiation between what color, race they come from. So that will help your question then. What's the situation of ragging? Because it's a medical school, and we try to teach them how to become a part of the team. So there is no bullying or any ragging whatsoever, because they study 2 years in Curacao. So the time that they spend in the island, 3 years in the Curacao, the time they spend in island is not enough to have the opportunity to bully or rag. At the same time, they move back to US where they have clinical rotation, so they are busy in their world. So the school keeps you busy that you don't have time to do anything. So the subject keeps you busy because the medicine is a very divine profession. So we teach them into corporate. So if anything comes to our attention, anything, we have people who can talk to the students who are creating those issues, which we never had. I mean, I'm knock on the wood, we do never anticipate will happen in the future also. So students are so happy when they come to SMU, and they don't have time to think for other things. Anything happening in situation, Martinez University, what will the action taken that person? If any unfortunate things happens in any with any student, we usually handle them individually at that time and see what is the problem, and try to make sure the student is secured and has been taken care, other than just being one-sided. The university also aware in this. Right, we have anti-discrimination, anti-ragging policies that will be given to the students when they come to the university very first day. जो स्टूडेंट कुछ कारण की वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते, उनके लिए क्या? Right, that's a very good question. Most of the students want to become a doctor, but during their time and their length of study, they might have some difficulties to complete the course. St. Martin's University has started some ancillary degrees along with the Doctor of Medicine. We have a Doctor of Nursing, Doctor of Physiotherapy, Bachelors in Health Administration and Public Health. So all these programs that will help to decide the student whether he wants to become a doctor, or if he couldn't become a doctor, he can downgrade himself to complete these programs and become a healthcare professional. So he could become a nurse, he could become a physiotherapist, or he could become a hospital administrative person too. So there are other courses that helps the student to graduate with a degree. So he is not left over, or he is not feeling that I couldn't complete my course because I couldn't pass the exams. So we don't compare with the quality of the doctors, because doctor may come and treat anybody, maybe to me. All right, so we should not compromise with the quality of the education. Right. That's the reason we take care, like everybody should qualify, everybody should fulfill all the criterias. अगर कोई criteria fulfill नहीं करता है तो then what to do? इतने साल उसके waste नहीं करना है हमें. That's the reason there are certain degrees we do have that yes, you are not able to. We are giving multiple chances to the student to qualify the examination. लेकिन जब वो बोलता है कि नहीं 3-4 बार मेरा हो गया and I am not able to qualify, in that case yes, they can still go to the United States, they can complete their public health program or maybe hospital administration program, and still they can get a degree, they can earn degree. Yeah. This degree also validated in India? Yeah, those degrees are all validated in India with NMC. We follow the NMC rules to graduate them. So our students are already practicing in India in various places.
In Mumbai, we have students who have graduated and practicing. We have in Jaipur, we have practicing doctors. We have in Hyderabad, we have practicing doctors. We have in Chennai. All over the, even in Kashmir, we have one of the students from Kashmir studied at our university and practicing there. There are these students, when the university started in 2000, they came to us, they finished their course, they graduated, and they came and registered themselves to become a foreign medical doctor in India. That time India never knew where Curaçao is, and they introduced us into the Indian system. So now we can say proudly that we have doctors from our school in India also. And last year, every year FMG exam holds 2 times, NMC holds the exam 2 times in a year, June and December. Last year we had 40 students passed our FMG exam. So which means, like, our students have been successful to become physicians in India also. So we have shared room accommodations, we have double sharing accommodations, multiple sharing accommodations, and then single room sharing accommodations. So we provide those according to the students' request, and they are available for all the students. And they can avail with the management when they come to Curaçao, and they can feel like more. We try to make them feel like more like their home, and especially focusing on studying. Gents, ladies, separate? Yes, we have boys hostel and we have the girls hostel. Yeah. There's a lot of questions asked. Let me tell you about the people who work at SMU. Okay, our retention of employee at SMU is over a decade. I mean, everybody who's working there has been working for us for over a decade. Okay, the doctors who teach there, they're like emotionally involved in the academics. So there's 2 sets of doctors. One is in the clinical, one who goes and practices medicine, sees patient day to day, and the other person is the other set of doctors is the teaching side. Okay, our faculty is wholeheartedly involved in teaching the best practices of medicines, including the ethics and everything, and they've been doing there for over a decade. Not just the academic side, the registrar, everybody is pretty involved in student day to day, and they've been doing a fabulous job. They treat everybody like their own kids. There's Dr. Soria, who's our chief academic officer, and Dr. Vinta is there. These guys are day to day involved, and they keep constant touch with the students. ये जो प्रोग्राम है, ये इसका मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि पहले 3 साल जो है कुरासाओ, जो कि अमेरिका से मायामी से 2 घंटे की दूरी पे है, वहाँ पे पूरा बेसिक साइंसेस बच्चे पढ़ लेते हैं। उसमें जो लैब है हमारी वो वेल इक्विप्ड है। उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, एज़ पर द यूएस स्टैंडर्ड होता है, करिकुलम भी एज़ पर यूएस स्टैंडर्ड है। उसके बाद एग्जिट टेस्ट है, दैट इज़ थर्ड पार्टी NBME। वो जब बच्चे पास कर लेते हैं, देन दे आर गेटिंग US वीज़ा फ्रॉम देयर, कुरासाओ से ही मिल जाता है। और उसके बाद दे आर गोइंग टू द कॉन्टैक्ट जनरल हॉस्पिटल इन मिशिगन, एंड वहाँ जाके वो क्लिनिकल्स पढ़ते हैं। उसमें उनके एग्ज़ाम्स वगैरह USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर करते हैं, एंड वंस इट इज़ डन तो उनको MD डिग्री मिल जाती है स्टेप 2 होने के बाद। उसके बाद वो लोग अप्लाई करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, जिसे हम PG कहते हैं, जिसे मास्टर्स कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, और ये जो PG है वो टोटली फ्री है। उसमें आपको पैसे नहीं भरना है, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। हमारे स्टूडेंट को करीब करीब कम से कम $50,000 पर ईयर का स्टाइपेंड मिलता है। 3 साल स्टाइपेंड मिलता है, 3 साल का कोर्स है। एवरी ईयर इट दे इंक्रीज इट। तो 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 150,000 उनको रिटर्न मिल जाते हैं। और जो कोर्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट 52 lakhs, मैंने जैसे बोला है आपको। और ऑल टुगेदर अगर लिविंग कॉस्ट भी हम पकड़ लेते हैं तो हार्डली इट इज़ 100,000। सो दे आर पेइंग 100,000 एंड दे आर गेटिंग 150,000 रिटर्न। सो देर इज़ गुड ROI, एंड प्लस दे आर गेटिंग रजिस्ट्रेशन एज अ फिजिशियन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डॉक्टर बन जाते हो तो आप बहुत सारे कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको UK करना है, आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। कनाडा में आप डॉक्टर बन सकते हो, आप US में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। बैक इन इंडिया आल्सो यू कैन प्रैक्टिस।
आपको बहुत सारे कंट्री में जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं. सो यू कैन से कि वंस स्टूडेंट बिकम डॉक्टर फ्रॉम सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी, गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, बिकम फिजिशियन, ही विल बिकम डॉक्टर वर्ल्ड वाइड. Right. We have a student also in our crowd here, Ms. Purva Dahat, who graduated and going into residency program in this June. So if you guys have any questions, she can also help answering them. And she could be the right example, right person to ask about security-wise, how the girls are dorms are available for them, and how they been treated there, and how their partiality, all those questions you can ask her. So. Hello everyone, myself I'm Dr. Purva Dahat. I recently graduated from St. Martinus University. I did my basic sciences after I passed my 12th standard in India, and that was for 2.5 years, after which I went to US to do my clinical sciences. And after doing my clinical sciences, completing my step 1 and step 2, I recently graduated and will be applying for residency now. So if you have any questions about the university, please feel free to ask. I'll answer to the best of my ability. आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, आपको कैसा एमबीएस लगा? इंडियन स्टूडेंट के परसेप्शन में पूछ रहा हूँ. कितना आसान है वहाँ पर एजुकेशन लेना, यूएस की बजाय वहाँ पर एजुकेशन लेना? सॉरी, इंडिया की बजाय वहाँ पर एजुकेशन लेना? ओके, सो क्योंकि मैंने इंडिया में तो मेडिकल पढ़ाई की नहीं है, तो मैं आपको कंपैरिजन नहीं दे सकती, पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ. तो वहाँ पे हमारे क्लासेस होते थे फ्रॉम 8 to 5, और वहाँ पे मतलब उसी में एनाटमी, डिसेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स होते थे. तो जो कोर्स है ना वो सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, 20 वीक्स इज ईच सेमेस्टर, एंड उसमें आपके 3 ब्लॉक एग्ज़ाम्स होते हैं. तो आपको मतलब हर 5 वीक्स के बाद आपकी एग्ज़ाम्स होती है, बीच में कभी कोई क्विज़ वगैरह भी हो जाता है. तो दैट वे यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड विद द मटेरियल दैट्स बीन टॉट टू यू इन द स्कूल. On top of that though, you have to study on your own, like you have to make time to study on your own as well. क्लासेस के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चंस करने होंगे फैकल्टी से, लाइक अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको इतना समझ नहीं आया हो, यू कैन एनीवेज लाइक एनी टाइम यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद वट एवर फैकल्टी यू वांट टू टॉक टू, एंड आप उनके ऑफिस में जाके वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि मतलब जो भी है करके. पासिंग फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स यू रिक्वायर 70%. सो अगर आपको 70% नहीं मिलते तो आफ्टर यू आर डन विद योर सेमेस्टर यू कैन रिपीट द एग्ज़ाम. If you're still not able to clear it, then however you have to repeat the semester. अगर एक लाइन में कहा जाए कि इंडियन स्टूडेंट क्यों चुना सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी को, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो यही था कि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसका जो टोटल ड्यूरेशन है ये भी बहुत कम है. इसके वजह से ये एक चीज़ ज़रूर होती है कि जैसे बाकी की यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें जो क्रेडिट आवर्स होते हैं, जैसे पर डे आपको जितना टाइम जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी को वो थोड़ा कम होता है, तो आपको बाहर भी कहीं जाने को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है. यहाँ पे क्योंकि ड्यूरेशन कम है तो आपको 8 to 5 क्लासेस होती है, उसके बाद आपको खुद की भी पढ़ाई करनी होती है. तो थोड़ा अगर आप मतलब इफ़ यू डोंट गिव अप एंड इफ़ यू कीप एट इट यू कैन ईजीली डू इट. दैट्स इट. प्रैक्टिकल जो होता है वहाँ पे नेचुरल बॉडी के ऊपर होता है क्या अननेचुरल बॉडी? सो कैडावर्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे हर क्लास को डिपेंडिंग ऑन कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनको उतने नंबर ऑफ डेड बॉडीज़ मिलती है टू प्रैक्टिस ऑन. द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. तो हम मतलब कट वगैरह करते हैं, हाँ रियल बॉडीज़ पे. वहाँ पे स्टोर करने के लिए है रूम, कैडावर स्टोर करने के लिए है. एंड सो एट माई टाइम वी ओनली यूज टू प्रैक्टिस ऑन कैडावर्स, बट नाउ आई थिंक दे हैव ऑल्सो ब्रॉट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन and stuff like that. So students can practice on dissection tables as well as the cadavers. Yeah, due to the COVID, the bodies bringing into the island is restricted, which we are working on them to be removed. So we also already bought the artificial anatomy tables, which has the entire body in the table itself,
and you can multiple times you can dissect and reuse the same body. It feels like you're dissecting a real human in the body itself. So we have that technology added to our university last 2 years ago, and now we are increasing those numbers. Once the island opens, because they have restrictions of bringing body, and island has a very less population, so death rate is low, so we don't get bodies as usually. We used to ship them from US in the past, 5 bodies a year, and then now we have reduced, since they restricted the body coming into the island, so we can't provide that services right away. Once they open, once the system is open back to normal, still some countries are not completely open for after the COVID. So we will bring them live bodies to, dead bodies also, to do the cadavers, to do the experiments and anatomy studies. Medical degrees are usually very intense on the mental health of students, right? So how was the campus life, and did they ensure there was a work-life balance with events and all that? Well, yeah. So, because the campus is on the island itself, it's very quaint, right? So everyone, you know everyone basically, and everyone knows you. So it's like a small community, and once you go there, obviously you are new. Everyone is new for you, but धीरे धीरे आपकी पहचान हो जाती है. आप you make your friends, you have your friend circle. And the thing is that weekends are off, so it's like Saturday, Sunday you don't have classes. And the island is very pretty. It has beautiful beaches. So on the weekends, yeah, you can go and chill on the islands. And we do celebrate all festivals, and Yeah. students has block parties after each exam. So they have all mixed. We just don't want them to be stressed to study only. We mix the normal life of a human being to enjoy everything. But we have a Hindu temple in the island. We have a mosque in the island. We have a huge churches in the island. So the balance of culture is there in the study, which is incorporated too. Also, they have student communities. We have AMA, we have SGA. So they have certain sub-communities within them. So those factions are like cultural community, editorial community, healthcare community and stuff. So these guys are basically responsible for arranging any event, including Indian cultural events like Diwali, Holi and everything. They also include sports events like football, basketball, and we also have health fairs. So that is something as a community outreach program as well as you get exposure to hone your skills, what you practice in the medical school. That's not really very invasive, but basic, checkup, what you can have, a regular checkup. It's free of charge, and so it's good for the community as well as good for us to practice. And we have that like twice a semester at least.